ओके जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारा नया सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्प्रिंग 2021 बैच 2018 विद 7th सेमेस्टर एंड I'm going to teach you the course Big Data Analytics. What basically we will cover, these are the contents and introductions regarding Big Data Analytics. First we will see the profile of the instructor or the course coordinator, then we will see the course information, book details, course objectives, course descriptions, marks distribution, week-wise course breakups, and the summary. The first thing is the profile of the teacher. Basically, my name is Khalid Mehboob, and I have completed my bachelor's and master's in computer science and information technology from NED University of Engineering and Technology. And currently, I'm a PhD scholar in the same field. And I have more than 10 years of academic experience from different institutions, and I have more than 10 research publications in different international journals and conferences, including ISI Indexed and Scopus Index Journal. Okay. So this is a little profile about me, and I am also currently designated as a senior lecturer in the Department of Software Engineering. This is basic information regarding the course. I'm the course in chart, whereas Miss Mavish Arsalan Lodi is my course teacher. And the course code is SWE419, and the course name is Big Data Analytics, and it's 3+0 credit hours course, means it does not have any lab. There are two books which we have personally decided to pursue. First is Practical Data Science with Hadoop and Spark, Designing and Building Effective Analytics at Scale by Ofer Medlakic and Casey Stila. Okay, this book would probably be available in your university library. Okay. And the next textbook is Pro Hadoop Data Analytics, Designing and Building Big Data Systems Using the Hadoop Ecosystem by Gary Kyortz. So this was the information about the textbook books. And now the reference book. The first reference book is Big Data Analytics by Anuradha Bhatia. And another reference book is Mining of Massive Datasets by Joe Lisoy. The main course objectives is basically the purpose of this course to help out the students to in order to learn, understand, and practice big data analytics and machine learning approaches, which include the study of modern computing big data technologies, because this course is going to offer for the very first time in the software engineering discipline. And so that definitely the students need to aware about scaling of machine learning techniques, focusing on industry applications and implications of big data analytics in different industries. Mainly, the course objectives are the conceptualization and summarization of big data and machine learning, trivial data versus big data computing technologies, machine learning techniques, and scaling up machine learning approaches. This is basically the course description or course outline, which has been designated by the Higher Education Commission, which defined in the curriculum or prospectus of HEC. First, we will see or begin with the introduction to big data analytics, and we will see that what is big data and what is analytics separately, and its different characteristics, its different benefits, and different forms of big data. And definitely we will see then big data platforms, data store processing using Hadoop, and storage and analytics, BDA, machine learning algorithms like clustering and classification, linked big data graph computing and graph analytics like MapReduce, and several other concepts, graphical model and Bayesian networks, and last but not least, we'll see big data visualization. There is a mark distribution. There is no as such lab included in this course, so you don't have any marks distribution criteria regarding lab or practical, where you will have your midterm examination of 30 marks, quiz and assignments of 20 marks, and final papers will be of 50 marks, comprising of wholly 100 marks. ये हमारा वीक वाइज कोर्स ब्रेकअप है, इसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको आगे चलकर जो है वो देखते रहेंगे कि हम किस वीक में क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, हमारा ये पूरा 15 वीक का जो है वो ये सारा हमारा जो है वो डेटा मौजूद है।
तो अब हम आ जाते हैं अपने बिग डेटा की तरफ, लेक्चर 1। ठीक है ना, बिग डेटा एनालिटिक्स हमारे पास होता क्या है। इसमें हम शुरू में देखेंगे डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिग डेटा की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्या हैं बिग डेटा के, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको 3 V's कहा जाता है, दैट इज वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी, व्हिच इज कैन बी रिगार्डेड एज अ स्पेशलिटी ऑफ बिग डेटा। एंड देन वी विल सी द बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा, और फिर बिग डेटा के स्टोरेज और एनालिटिक्स के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। The first thing is the definition and characteristics of big data. Big data is high volume, high velocity, and high variety information assets that demand cost-effective, innovative forms of information processing for enhanced insight and decision making. बेसिकली हम बिग डेटा कहते किसको हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डेटा। ठीक है, देयर आर सो मैनी definitions which are normally available on different resources like internet and books, various books में आपको हर किसी न किसी फॉर्म में जो है वो डेटा की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। बेसिकली डेटा जो है उसको आप जो है वो ऑर्गेनाइज वे ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ों का जो है वो डेटा मौजूद होता है। ठीक है, आपके पास वैरायटी होती है डेटा की, बहुत तरह का डेटा होता है। आपके पास टेक्सचुअल डेटा होता है, आपके पास वीडियो डेटा होता है, साउंड्स का डेटा है, इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं। देयर आर सो मैनी इंफॉर्मेशन और सो मैनी डेटा बेसिकली अवेलेबल टू यू। तो बेसिकली द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, अब जब हम बात करते हैं, हम मूव कर जाते हैं बिग डेटा की तरफ, तो दैट्स मीन वी हैव हाई वॉल्यूम, हाई वेलोसिटी एंड हाई वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको आगे चलकर हम देखेंगे, दीज आर द वेरी बेसलाइन फाउंडेशन ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आगे चल के हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इट मीन बाय वॉल्यूम, व्हाट इट मीन बाय वेलोसिटी, व्हाट इट मीन बाय वैरायटी। ठीक है ना, तो बेसिकली पर्पस ये कि जब हमारे पास ये बहुत सारा डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना, तो इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव है, हमें किस तरीके से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, या वो किस फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, वो हमें देखना होगा कि हमारे पास आइदर स्ट्रक्चर्ड डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। ये भी 3 कैटेगरीज हैं आपके पास डेटा की। तो ये हम देखेंगे कि हमारे पास डेटा ये है किस फॉर्म में। ठीक है, और इसकी जो भी हम इसमें से इसकी माइनिंग करेंगे, या इसमें जो हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी, तो वो उसका पर्पस क्या होगा, इन ऑर्डर टू इनहांस्ड इंसाइट एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमारी अपनी जो नॉलेज बेस है उसको इंक्रीज कर सके, हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है उसको हम जो है वो इन्हांस कर सकते हैं, उसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, it's basically derived from while enterprises struggle to consolidate systems and collapse redundant databases to enable greater operational, analytical, and collaborative consistencies. Changing economic conditions have made this job more difficult. E-commerce in particular has exploded data management challenges along 3 dimensions: volumes, velocity, and variety. In around 2001-2002, IT organizations must compile a variety of approaches to have at their disposal of dealing each. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, डेफिनेटली दे ऑलवेज do some struggle in order to consolidate their system, in order to design some appropriate measures. ठीक है, और जो हमारे पास रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, रिडंडेंट डेटाबेसेस हैं, जिसमें हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दैट इज अननेसेसरी, और जो हमारा जो है वो बिला वजह में हमारी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही होती है। ठीक है, और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, तो वो हमारे जो ऑपरेशनल, एनालिटिकल और कोलैबोरेटिव कंसिस्टेंसीज होती हैं उनको वो कहीं ना कहीं हिट कर रही होती है, या कहना चाहिए कि उसको जो है वो उसके लिए डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करने का भी सबब बन सकती है। ठीक है ना, तो एज फार एज कंसर्न द इकोनॉमिक कंडीशंस, जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी चेंज हो रही हैं, तो हमारे लिए ये मतलब कहना चाहिए कि इंफॉर्मेशन आपके पास सेकंड्स में चेंज होती है, यू नो दैट। ठीक है, लाइक आपके पास वेब का डेटा है, अगर आप देखें तो ये सब बिग डेटा, फेसबुक है, फेसबुक इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ बिग डेटा। देयर द यहाँ वहाँ पे आपके पास वैरायटी भी है, वहाँ पे आपके पास वॉल्यूम भी है। ठीक है ना, वहाँ पर आपके पास वेलोसिटी भी है, मींस कि आपके पास फेसबुक पे ना जाने मिलियन ट्रिलियंस ऑफ पीपल्स हैव देयर अकाउंट्स ऑन द फेसबुक। ठीक है ना, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनके अकाउंट्स वहां मौजूद है। दुनिया के हर तबके माश से ताल्लुक रखने वाले लोग, हर तबके फ़क्र से ताल्लुक रखने वाले लोग, किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखने वाले लोगों का फेसबुक के ऊपर वहाँ पर डेटा मौजूद है, उनके अकाउंट्स वहाँ पे मौजूद है। देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, और वॉल्यूम और ह्यूज वॉल्यूम के साथ साथ वहाँ पे ह्यूज वेराइटी भी है, यानी कि आप फेसबुक के ऊपर आपका टेक्स्ट डेटा भी है, आपके पिक्चर्स भी हैं, आपके वीडियोस भी हैं।
ठीक है ना, आपकी हर तरह की चीज़ें हैं, इमोट आइकन्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारे इमोशंस भी हैं जिसको आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस आपके पास आ जाता है। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब ये होता है, ओपिनियन माइनिंग भी कह सकते हैं उसको आप, जिसमें जो इंसान की फीलिंग्स होती हैं, जो इंसान के इमोशंस होते हैं, उनको वो वहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ कम्युनिकेशन भी है, जिसमें आप वहाँ पे मैसेंजर भी है, वहाँ पे आप एक दूसरे से जो है आप मैसेजेस भी कर सकते हैं, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं। तो देयर आर वेराइटी ऑफ डेटा, वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन फेसबुक। तो ये सोचिए कि कितना बड़ा, कितना इसका जो कहना चाहिए इसका मास है वो कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। और फिर वेलोसिटी का मतलब है कि किस रफ्तार से, किस फ्रीक्वेंसी के साथ, किस रेट के साथ जो है ये सारी चीजें हो रही हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस हो रही है। मतलब कितने मिनट कितने सेकंड्स में आप देखते हैं कि जब आप अभी फेसबुक का फर्स्ट पेज खोलते हैं तो उसमें सेकंड्स में जो है आपकी न्यूज फीड्स जो है वो चेंज होती रहती हैं, और सेकंड्स के अंदर आपके जो भी यूजर्स, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी यूजर्स या फ्रेंड्स होते हैं, वो सेकंड्स में जो है वो आपके जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई पोस्ट कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें जो आपकी नजर से जल्दी जल्दी ओझल होना शुरू हो जाती है। दैट्स मीन कि कितनी फास्ट रेट और कितने फास्ट वेलोसिटी के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी चेंज हो रही है। तो फेसबुक इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा। तो यहाँ हमने जो है वो थोड़ी सी डेफिनेशन देखी है बिग डेटा के बारे में, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट वन हैज टू डील हैज एक्सप्लोडेड टू unimaginable levels in the past decade, and at the same time the price of data storage has systematically reduced. Private companies and research institutions capture terabytes of data about their users' interactions, business, social media, and also sensors from devices such as mobile phones and automobiles. The challenge of this era is to make sense of this sea of data. दिस इज वेयर बिग डेटा एनालिटिक्स कम्स इनटू पिक्चर। यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम जो है उसको इस टर्मिनोलॉजी को या इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम मूव कर जाएं, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके पास, वैसे वैसे जो है आपका अमाउंट ऑफ डेटा वो भी बढ़ रहा है, ठीक है ना किसी फॉर्म में, ठीक है। और देयर सेवरल थिंग्स दैट हैज़ नीड टू बी मैनेज एट द सेम टाइम। अगर हम उन चीज़ों को नहीं मैनेज करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे मैनेज नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम उनके जो है वो चीज़ों को नहीं अकोमोडेट करेंगे, तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी, हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो वो हो सकती हैं। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास डेटा जो स्टोरेज है वो भी हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है कि किस तरीके से हम जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनीज हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो टेराबाइट्स में जो डेटा है यूजर्स के बारे में, जो इंट्रैक्शंस हैं, बिजनेस है, सोशल मीडिया है, और जो भी आपके पास लाइक मोबाइल फोन्स का डेटा है, ऑटोमोबाइल्स का डेटा है, ये सारा डेटा आपका जो है वो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रैपिडली, ठीक है ना। तो इसको ये सबसे बड़ा, दिस इज अ चैलेंज ऑफ दिस एरिया टू मेक सेंस एंड मेंटेन द सी ऑफ डेटा, ठीक है ना, कि इस तमाम चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। उसमें प्राइवेसी भी आ जाती है, उसमें आपकी सिक्योरिटी भी आ जाती है। अभी आपको पता होगा कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप का एक जो है वो एक हाइप क्रिएट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप इज गोइंग अबाउट टू लीक योर इन्फॉर्मेशन ऑन द फेसबुक एंड ऑन सेवरल डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स इनोवेट हो रहे हैं, नए नए फीचर्स जो है उसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप जो इन तमाम चीज़ों को जो है वो किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए, इन चीज़ों को किस तरह से मेंटेन किया जाए, यहाँ पर जो है कि देयर इज टू डिस्कस अबाउट द बिग पिक्चर ऑफ द बिग डेटा एनालिटिक्स, कि क्यों हमें बिग डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। Big data analytics largely involves collecting data from different data sources, munch it in a way that it becomes available to be consumed by analysts, and finally deliver data products useful to the organization.